Fundamental unit of life. All living organisms are made up of fundamental unit of life called cell. Cell is Latin for a little room. These are the cells, and this one single room is known as little room, that is known as cell. Scientist Robert Hooke saw a little room in the cork. He saw it in the bark of a tree, so he resembled the structure of honeycomb. He saw the structure in the bark of tree and he resembled the structure. उसने देखा कि वो honeycomb की form में है. तो the use of word cell to describe this unit is used till this day in biology as cell. Compound microscope. A compound microscope was discovered consists eyepiece and objective lens condenser to observe a cell after putting a drop of saffron in. It is for plant cell and methylene blue for animal cell. So there's a diagram in theory book page 57. Leeuwenhoek saw free living cells in the pond water for the first time. He was the first one to see the pond water, the living cells. And scientist Robert Hooke Brown discovered a nucleus in the cell, and he also discovered the dead cells. So scientist Robert Hooke discovered the nucleus in the cell. There's the cell and there's the nucleus. So he discovered this nucleus, and thus Robert Hooke discovered the nucleus. Cell theory states that all plant and animal are composed of cells, that every organism is made up of cells, and was proposed by Schleiden and Schwann. These are the two main scientists in this chapter, and the cell theory was further expanded by Virchow. Full name was Rudolf Virchow, and he stated that all cells arise from pre-existing cells. This is the first cell, second cell, so the third one will be from this cell only. The cells differ in size, so there's this difference between the cells. They differ in size. This one is rectangular in shape, this one is rectangular in shape, and I can say circular in shape, rectangular in shape, Cells differ in size, shape, structure, and types of cells. So there are just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 type of cells: onion cell, smooth muscle, blood cell, bone cell, fat cell, nerve cell, and movement sperm. Each kind of cell performs specific function, and this is given on page 59. So a single cell may constitute a whole organism, as an amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, bacteria. They are also known as unicellular. So the cells that are made up of only one kind of cell is known as unicellular organisms, whereas in multicellular organisms, human being division of labor is seen. Cells that are made up of more than one type of cell is known as multicellular organisms. In multicellular organisms, division of labor is seen as this cell is made up of more than two types of cells, or more than two types of cell is known as multicellular organisms. So the feature in almost every cell is same. अब एक सेल वो कैसे बना होता है वो देखेंगे. ऑलमोस्ट हर सेल चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ऑलमोस्ट सेम होता है. कुछ थोड़े से डिफरेंस होता है. जैसे हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तो होता ही है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की. सपोज दिस इज द सेल, so this is the outer covering, that is the red one is the outer covering of the cell,
and because it prevents movement of submaterials, it is also known as selectively permeable membrane. Plasma membrane is also known as selectively permeable membrane because it is the outermost covering of the cell, so it prevents movement of submaterials outside and inside of the cell. It helps in diffusion and osmosis. Diffusion, movement of substance from higher concentration to lower concentration. Diffusion is movement of substance from higher concentration to lower concentration. Suppose this is the solution of sugar, and this is the salt. So this is in high concentration, so it will go from high concentration to low concentration. So this is the process of diffusion, and for example, exchange of carbon dioxide or oxygen with external environment. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो पास थ्रू होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पूरे एनवायरनमेंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है और O2 लेता है, तो ऐसे जो ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फिगर फॉर दिस. हायर कंसंट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and here only 3 are present. So from higher concentration, from 8 to 3, this is the high level and this is the low level. So from 8 to 3, that is high concentration to low concentration, is the process of diffusion. Now osmosis. It is the passage of water from region of higher water concentration to region of low water concentration to selectively permeable membrane, that is plasma membrane. Solute water. This is the green color is the solute and the rest blue color is water. Water and solute. This is the process of osmosis, as there is a boundary present. This is boundary is present where solute and water are present. So solute are in more level than water, so it will go from high concentration to region of low water concentration. So यहाँ पे वाटर कम है, वाटर बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है. तो from higher concentration of water to lower concentration of water with the help of semi-permeable membrane is known as osmosis. Cell gains water. So the cell gains water if medium of surrounding cell has higher water concentration. अब सेल है, उसके अंदर अगर उसके आसपास जो भी सराउंडिंग में, वो तभी गेन कर पाएगा और अपने आप को स्वेल हो पाएगा जब यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा और फिर वो पानी अंदर चला जाएगा तो वो स्वेल हो जाएगा सेल बहुत ज़्यादा. अगर वही पानी सेम इतना पानी यहाँ अंदर है, जैसे 5 लीटर का पानी अंदर है और 5 लीटर का ही बाहर है, तो ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, और अगर जाएगा और आएगा भी तो इक्वल अमाउंट का ही रह जाएगा. एंड वाटर क्रॉसेस टू सेल मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. जब सेल वाटर लूज़ करता है, अगर मीडियम में 2 लीटर है और बाहर 1 लीटर, तो कम अंदर आएगा, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बल्कि अगर हमारा मीडियम में 4 लीटर है, तो अगर हमारे सेल में से पानी जाएगा तो बल्कि हमारा सेल 2 लीटर से भी ज़ीरो में आ जाएगा, दैट इज़ ज़ीरो. तो हमारा सेल जो था वो श्रिंक हो जाएगा बहुत ज़्यादा. सो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब स्वेल होता है, आइसोटोनिक जब सेम रहता है, और हाइपोटोनिक जब श्रिंक हो जाता है. Like for example, hypotonic, you can learn this by the example of hippopotamus.
Note: cell drinking is on endosmosis. So this is the osmosis of water is known as exosmosis. जब पानी बाहर को जाता है तब उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, और जब पानी अंदर को जाता है तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस. The figure is given as this is the plasma membrane, this is vesicle, and this is vesicle. So extracellular fluid. So this process is known as endosmosis and this process is known as exosmosis. So cell organelle engulf food. So the cell engulf its food called endocytosis by the process of endocytosis, and reject solid is known as exocytosis. अगर अमीबा जैसे है, ये अमीबा है, अगर इसके यहाँ पे फूड पड़ा है तो ये क्या करेगा, ये अपनी फॉल स्वीट बना लेगा और फिर उसके बाद उस फूड को इनगल्फ कर लेगा और फिर ये उसकी बॉडी में आ जाएगा. तो इसका मतलब फिगर ऐसा सा कुछ बनेगा. ये मतलब इसी के अंदर आ जाएगा और ये फूड को इनगल्फ कर लेगा और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. और अगर वो अपने अंदर से कुछ पास ऑन करता है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. सो जब गेन करता है एक तरह से तो एंडोसाइटोसिस, और जब लूज़ करता है तो एक्सोसाइटोसिस. सो सेल वॉल इज रिजिड आउटर कवरिंग कॉम्पोजिट ऑफ सेल्यूलोज. अब सेल वॉल जो होती है, एक तो हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है एनिमल में भी होती है, लेकिन जो हमारी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, नॉट इन एनिमल सेल. और वो बनी होती है, जैसे हमारा ये प्लांट सेल है, इसकी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. दिस इज़ द सेल वॉल. दिस आउटर कवरिंग इज सेल वॉल. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज and it is rigid. Rigid means very strong and thick. So when living cell loses water there is shrinkage of content. जब एक लिविंग सेल अपने से पानी को बाहर लूज करता है तो उसमें सेल जो होगा श्रिंक हो जाएगा, कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और फिर वो सेल वॉल से भी दूर हो जाएगा. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. इसी को ये प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं. जब सेल वॉल परमिट करता है सेल ऑफ प्लांट फंगी बैक्टीरिया विच स्टैंड वेरी डिल्यूट. डिल्यूट मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है. और फिर उसके बाद जो सेल वॉल, अब जैसे अगर कोई प्लांट सेल है, अगर वो अपने में से कुछ लूज़ करता है तो उसके बाद वो श्रिंक हो जाता है. लेकिन जब प्लांट सेल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक ये जो होती है लास्ट वाली, ये जो होती है ये सेल वॉल होती है. तो सेल वॉल हेल्प करती है. जैसे अगर ये गेन करता है वाटर तो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है जिसकी वजह से बर्स्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. किसके बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं. लेकिन जो सेल वॉल होती है वो बचा लेती है बर्स्ट होने से. यही लिखा हुआ है. Cell of plant fungi bacteria withstand very dilute external media without bursting. So nucleus is dark colored spherical or oval dot like structure near center of cell. So this is a dark color spherical. Spherical is this shape और oval like structure center cell के center में पाया जाता है. इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस अब बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर सेंट्रल रोल प्ले करता है एक्टिविटीज़ में. जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स. जैसे कोई क्रोमेटिन मटेरियल है तो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हो जाता है. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स इन उनके अंदर कंटेन करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. दिस इज इंपॉर्टेंट इन 1 मार्क क्वेश्चन. सो एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो जो फंक्शन होता है सेगमेंट का डीएनए का, उनको ही हम जीन्स बोलते हैं. क्या ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया न्यूक्लियस, उसमें वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता. जैसे उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स दैट आर नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is known as prokaryotic cells. Pro means primitive, that is old,
And karyote means carry on, that is nucleus. Organisms with cell having nuclear membrane are known as eukaryotes. जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट and eukaryotes, it's very important. So difference is as follows. Size generally small. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दैट मीन्स द ओल्ड वन, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है. न्यूक्लियर रीजन वो इतने डिफाइन नहीं होते और ना ही उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको बोलते हैं न्यूक्लियाइड्स. और वो बहुत वेल डिफाइंड होते हैं, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है एज वी हैव रेड बिफोर. नेक्स्ट, chromosomes. They are single chromosomes, more than one chromosome. Membrane bound cell organelle absent. Organelles नहीं होती इसके अंदर होती है. Bacteria, blue green algae, plant cell, animal cell, fungi. Bacteria तो हमारा इसमें आता है, इसमें हमारा fungi आता है, plant cell आता है, animal cell आता है. Cell organelle. So last topic is cell organelle, and every cell has fluid matrix. Suppose this is the cell, this is the nucleus, and this fluid that I've drawn, this is other than nucleus, this is known as cytoplasm. Let's recall the structure of nucleus. This is, let me draw it again. Suppose this is a cell, this is nucleus. This fluid-like structure is known as cytoplasm that I'm drawing now. This is a plasma membrane, and this, so let's mark, this is nucleus, this is cytoplasm, this is cell wall, plasma membrane, and this is cell wall that is only present in plant cells and not in animal cells. So न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो दोनों मिलाकर जब हमारे अंदर ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म होता है और जो ये साइटोप्लाज्म है, जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रोटोप्लाज्म. और ये किसने करा था, क्वाइन, इट वाज क्वाइन बाय पुरकिंजे. इट हैज़ इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली. इसके अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनलीज होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, vacuoles, endoplasmic reticulum, that is also known as ER. Endoplasmic, first one is endoplasmic reticulum. Large network of membrane bound tubules and vesicles. दो तरह के होते हैं, rough endoplasmic reticulum, that is RER, और second one is SER. So what's the difference between RER and SER? In RER, ribosomes are present. They are attached to its surface and they are the size of a protein then. But in SER, it's very smooth because ribosomes are not present and they are the sites for fat molecules, as RER is the site for protein synthesis, but SER is the site for fat molecule synthesis, also known as RER, also known as CER. It's rough, it's smooth. It's rough because ribosomes are attached to its surface, and it is smooth because ribosomes are not attached to its surface. SER function, some functions, important functions of SER are help in the functioning of enzymes and hormones to carry out biochemical activity. Function enzymes में होना, hormones में होना, ताकि वो अपनी activity, biochemical activity perform कर पाए. And SER detoxify many poison. अगर कोई सेल में पॉइजन एंटर करता है तो वो उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है, मतलब मार देता है, और ड्रग्स को भी.
ER serves as channel for transport of material. ER है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल बहुत सारे रीजन्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के. ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, तो उसके रीजन में बहुत सारी चीज़ें आने देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ER. प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स जो ER प्रोड्यूस करता है वो मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस में भी हेल्प करता है. जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्गी apparatus. This is very important. It was described by scientist Camillo Golgi. System of membrane-bound vesicles, also known as cisterns. Only one type of membrane that is bound is known as cisterns, and it one single system of membrane bound is known as cisterns. If there are pair of this system of membrane, they are known as cisternae. Cisternae. And what does it do? It functions include the storage, modification, पैकेज करता है सेल को और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करता है. complex sugar are made of simple sugar in the Golgi apparatus involved in the formation of lysosomes. जो lysosomes है वो क्या होते हैं? वो membrane bound sacs होते हैं with powerful digestive enzymes, और जो enzymes होते हैं बने होते हैं RER के, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनली. जो सेल है वो डैमेज हो जाता है, जो लाइसोसोम्स हैं वो बर्स्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद वो मर भी सकते हैं. तो जो लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट हैं ओन सेल, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, वो अपना खाना खुद ही डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बर्स्ट हो सकते हैं और उनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने आप ही मर जाते हैं. और वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. कोई भी वेस्ट अगर आपको सेल में मिले तो उसको लाइसोसोम में पहुंचा दिया जाता है, इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है. वो कभी भी मर सकते हैं और कभी भी बर्स्ट हो सकते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको कवर कर जाता है एक डबल मेम्ब्रेन से. जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत पोरस होती है, लेकिन पोरस मतलब नॉर्मल, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है. दिस फोल्ड्स क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP. ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस. जो ATP है वो एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं उसको, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और देखो जो ATP है मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं. और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया उनका खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं, तभी वो अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं. दे आर सेल्फ डिपेंडेंट बेसिकली. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. दे आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड नॉट इन एनिमल सेल्स. There are two types, chromoplast, leucoplast. So chromoplast is the colored plastid. Chloroplast, green, pigmented and useful in photosynthesis and contain various other pigment like yellow and orange. Next one is leucoplast, that is white or colorless plastid. The white और कलरलेस प्लास्टिड्स हो जैसे कि ऑयल, प्रोटीन, फैट्स, और जो प्लास्टिड है उनको कवर करा जाता है एक डबल मेम्ब्रेन से. जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है स्टोमा में, सी फ्रॉम एक्जिमेटिक एक्शंस. प्लास्टिड्स के खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होता है, तभी वो अपना खुद का DNA बना सकते हैं. जो वैक्यूल्स है वो स्टोरेज सैक्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के. बहुत छोटे साइज़ में होता है वो, सिर्फ एनिमल्स साइज़. इन एनिमल्स में वैक्यूल्स का बहुत छोटा साइज़ होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में बड़ा होता है. तो वो ऑक्यूपाई करता है 50-90% सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल में. बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जैसे एमिनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, वो वैक्यूल्स में ही होते हैं. जो अमीबा का फूड है वैक्यूल इज स्पेशलाइज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. जो सेल है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन और क्लियर करता है वेस्ट मटेरियल फॉर्म, और एक नया फॉर्म भी करता है अपना खुद का प्रोटीन. प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस भी है. जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है
This is the cell wall. This last one, this is absent in animal cell, and plant cell it's present. Plasma membrane is outer covering which provide turgidity, लेकिन इसमें cell wall outer covering होती है जो rigidity turgidity दोनों provide करती है. Vacuoles छोटे साइज में होते हैं, vacuoles बड़े साइज में होते हैं. Plastids are present, plastids are absent. Nucleus lie in the center, nucleus lie in one side. Some questions, so let's solve them. All living organisms are composed of fundamental unit of life. I'll erase the answer. All living organisms are composed of fundamental unit of life, that is cell. Who discovered nucleus in the cell? All living organisms are composed of fundamental unit of life, that is cell. Who discovered nucleus in cell? Robert Hooke. अगर स्पेसिफिकली आएगी किसने डेड सेल डिस्कवर करे थे तो फिर आप नाम ले सकते हो, तब आपको रॉबर्ट हुक का नाम नहीं लिखना. हु सॉ फर्स्ट लिविंग सेल फॉर फर्स्ट टाइम? किसने देखा था फर्स्ट लिविंग सेल फर्स्ट टाइम के लिए? ल्यूवेनहुइक, एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक. फुल नेम वाज एंटन वॉन ल्यूवेनहुइक. Two unicellular organisms, you can say amoeba or chlamydomonas or bacteria, or you can say protozoa. Difference between prokaryotes and eukaryotes. I already told you, nuclear region present होती है, उसमें absent होती है, chromosomes present होते हैं, absent होते हैं. जो vacuoles होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जिसमें vacuole होता है बहुत बड़ा होता है. They are small in size, they are big in size. There are so many difference. Two types of ERS. So RER, that is rough endoplasmic reticulum, and smooth endoplasmic reticulum. Functions of Golgi apparatus include storage, modification. वो अपने में स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैकेज करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. जो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर शुगर होते हैं जो सिंपल शुगर से बना होता है, और वो उनके अंदर एमिनो एसिड्स लाई करते हैं. वी रेड अबाउट दिस. शुगर लाई करता है, सॉल्ट लाई करता है. फॉर टाइप्स ऑफ plastids, chromoplast, leucoplast and chloroplast are also present. Amino acids, sugar, organic acids and proteins stored in vacuoles. Next, draw and label animal cell and plant cell. So you can do this from the book, that is 63 and 64 page. Here are some questions for you. Just take the screenshot. What is the ATP? Expand the term. It's very easy. Adenosine triphosphate. I'll just dictate. Cellulose is fat. Mention true or false. Cellulose is fat. Yes. Which cell organelle is synthesizing the enzymes by Golgi apparatus? This you have to do. Flexibility of cell membrane to engulf food and other materials is known as endocytosis. True. And main function of leucoplast, you have to do this on your own. Why plasma membrane is known as selectively permeable membrane? Because it is the outer covering of the membrane and it protects the plants from external environment. What is isotonic solution? जिसमें हमारा solution बाहर और अंदर एक ही जैसा होता है, same amount का होता है. Plasmolysis, this you have to do on your own. Parts of compound microscopes. This is not important, you can just leave this. Distinguish between prokaryote and eukaryote. I have told you this answer twice, so you can do this on your own. Okay. Write 3 property of cytoplasm. Cytoplasm, okay, so this is the fluid material, and cytoplasm plus nucleus form protoplasm. Okay,
Significance of vacuoles, it is present only in, no, it is present both in plant and animal cell. In animal cell is small in size, plant cell is big in size. Short note on mitochondria, you can do this on your own. It's very simple. Concept of diffusion, higher concentration to low concentration, this is diffusion. And structure of plant cell and label it, you can do this from the book. I'll tell you the page number. That is plant cell is on page number 64, left column. Go through it. And difference between plant and animal cell, I already told you. You may take the screenshot too from this plant and animal cell, this one. Bye, thank you.